Namaskar. Good evening, viewers. You're watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host, Rajiv Kumar Singh. After 5 days of logjam, Parliament returned to normalcy on Tuesday. Both the houses of the Temple of Democracy witnessed meaningful dialogue, deliberations and smooth functioning for the first time in this winter session. In this program, we will take a look at all that transpired during the parliamentary proceedings on Tuesday. Before we delve into the details of what happened in the two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, let us take a quick look at the headlines. Normalcy returns to Parliament. Both the houses discuss and deliberate for the first time this winter session. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar makes a statement on India-China ties, says relationship on course of some improvement. Lok Sabha passes the Banking Laws Amendment Bill 2024. Bill further amends Reserve Bank of India Act 1934, the Banking Regulation Act 1949, along with other laws related to the sector. The Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024 passed by the Upper House. The elders also discussed the Bharati Vayuyan Vidhayak 2024. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today gave a detailed statement in the Lok Sabha on India-China ties and the recent border truce. The minister reiterated that New Delhi remained committed to engaging with Beijing to arrive at a fair, mutually acceptable framework for boundary settlement. Honorable Speaker, sir, I rise to apprise the House of some recent developments in the India-China border areas and their implications for our overall bilateral relations. The House is aware that our ties have been abnormal since 2020, when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. The House is cognizant of the fact that China is an illegal occupation of 38,000 square kilometers of Indian territory in Aksai Chin as a result of the 1962 conflicts and the event that preceded it. Furthermore, Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory to China in 1963, which has been under its occupation since 1948. India and China have held talks for multiple decades to resolve the boundary issue. While there is a line of actual control, LAC, it does not have a common understanding in some areas. We remain committed to engaging with China through bilateral discussions to arrive at a fair, reasonable, and mutually acceptable framework for a boundary settlement. Three key principles must be observed in all circumstances. One, both sides should strictly respect and observe the LAC. Two, neither side should attempt to unilaterally alter the status quo. And three, agreements and understandings reached in the past must be fully abided by in their entirety. We have been very clear that the restoration of peace and tranquility would be the basis for the rest of the relationship to move forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on these objectives. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague, Raksha Mantriji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military counterpart was the Senior Highest Military Commanders Meeting, SHMC mechanism. I would like, sir, to inform the House today about the agreement reached on 21 October 2024 regarding Depsang and Demchok.
The twin considerations of an unstable local situation and an impacted bilateral relationship were clearly the drivers for these recent endeavors. These two areas have been the focus of our discussions in both WMCC and SHMC with the Chinese side since September 2022, when the last disengagement agreement was concluded at Hot Springs area. Sir, through you, I would like to inform the House that disengagement has been achieved in full in eastern Ladakh through a step-by-step process, culminating in Depsang and Demchok. With the task of disengagement completed, it is now our expectation that discussions would commence with regard to the remaining issues that we have placed on the agenda. The House would also recognize that there has been a significant improvement in the border infrastructure, which has made such effective counter-deployment possible. This is reflected, amongst others, in the increase of border infrastructure allocations in the last decade. We are clear that the maintenance of peace and tranquility in border areas is a prerequisite for the development of our ties. In the coming days, we will be discussing both de-escalation as well as effective management of our activities in the border areas. The conclusion of the disengagement phase now allows us to consider other aspects of our bilateral engagement in a calibrated manner. The proceedings in the Lok Sabha began with the question hour. Questions related to the National Commission for Weavers, allocation of fund under MGNREGS, setting up of a steel plant in Meerut and implementation of PM Kisan scheme could be asked within the stipulated time. Shivraj Singh Chauhan answered a number of questions on Tuesday. Replying to a question on allocation of a fund under MGNREGS, Shivraj Singh, as the Union Minister of Rural Development, said that the West Bengal government has not been implementing this scheme properly. Non-deserving people are benefiting from the scheme in the state, while deserving poor people have been kept out. मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, ये राशि है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए और इसी एक्ट में प्रावधान है। अगर ये राशि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च नहीं की जाती तो इसको रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अपात्रों को पात्र कर दिया गया और पात्रों को अपात्र कर दिया गया। ये प्रमाणित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की योजनाओं के नाम बदल दिए। नाम बदला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के अपना नाम इन्होंने रखने का अपराध किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस योजना के अंतर्गत भी अपात्रों को लाभ दे दिया और पात्रों को बाहर कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, अपात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। जो गड़बड़ की गई वो सिद्ध पाई गई, उस पर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मोदी जी का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जब से एनडीए की सरकार आई है, उधर की सरकार जब थी तब इस राशि का दुरुपयोग होता था, बंदर बांट होती थी, लेकिन मोदी जी का कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये खाने देने के लिए राशि नहीं है। माननीय अध्यक्ष, Replying to a question on implementation of PM Kisan, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said in the Lok Sabha that MSP on many food items increased 2.5 to 3-folds during PM Narendra Modi's tenure. Dissatisfied members of the opposition staged a walkout from the lower house during his answer. प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसने लागत पर 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और सामने जो मित्र बैठे हैं, उन्होंने तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश मानने से ही इनकार कर दिया था। कहा था कि बाजार विकृत हो जाएगा। इस सरकार ने
लागत पर 50% लाभ तय करके न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। और मैं एक वानगी माननीय अध्यक्ष महोदय दिखाना चाहता हूं। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी बता रहे थे, आप लोग हल्ला कर रहे थे। धान का एमएसपी जब उधर की सरकार थी तो 1310 रुपया था, बढ़ाकर 2300 रुपया क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ज्वार का एमएसपी 1500 रुपया प्रति क्विंटल था, उसको बढ़ाकर 3371 रुपया क्विंटल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बाजरा का एमएसपी 1250 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 2625 रुपया प्रति क्विंटल किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। रागी का एमएसपी 1500 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4290 रुपया प्रति क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मक्का का एमएसपी 1310 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 2225 रुपया क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तूर का एमएसपी 4300 रुपया क्विंटल से बढ़ा के 7550 रुपया क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मूंग का एमएसपी 4500 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 8682 रुपया प्रति क्विंटल किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। अब सुन के तो जाओ, उड़द का एमएसपी 4300 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 7600 रुपया प्रति क्विंटल किया। मूंगफली का 4000 से बढ़ा के 6783 रुपया प्रति क्विंटल किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कम से कम सुनकर तो जाए। मैं पूरी सूची है, 2.5 गुना और 3 गुना एमएसपी बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है। और मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। जब उधर की सरकार थी ये खरीदते नहीं थे, केवल एमएसपी घोषित करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन के जाए, इनने दलहन की खरीद 6,29,000 मीट्रिक टन की थी। मोदी जी की सरकार ने 1,71,00,000 मीट्रिक टन खरीदी है। हम खरीद भी रहे हैं, दाम भी दे रहे हैं, एमएसपी भी बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। After the question hour, members from various political parties raised matters of urgent public importance related to their constituencies. Along with other issues, matters related to health, tenant farming and education were also raised. पहले से ही भारी भीड़ है एम्स पे, तो इसके कारण प्रशासन पर भी एम्स के बहुत जोर पड़ता है। और हमारे संसदीय क्षेत्र में अगर एम्स स्क्रीनिंग सेंटर लगती है तो सिर्फ हमारे क्षेत्र को ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलावे उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि हमारे दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास हमने चिन्हित कर रखी है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस दिल्ली में आयुष्मान योजना तक रोका हुआ है, आपका भी हृदय तड़प जाएगा सभापति जी, यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति इसको समर्थन नहीं कर सकता कि 5 लाख रुपया जो प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए और अब बुजुर्गों के लिए भी दे रहे हैं, दिल्ली उसको लागू नहीं कर रही है, हमको कोर्ट जाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र में एक एम्स स्क्रीनिंग सेंटर हो, पहले से पता चल जाए परेशानी क्या है, एम्स में जाना भी है कि कहीं और भेज सकते हैं, इसकी आवश्यकता के लिए मैं अपनी राय रखता हूँ। Today, in the reply given by the Honorable Agriculture Minister, he has mentioned that almost 9 crore farmers are getting PM Kisan Samman Nidhi to the tune of 60,000 crores, sir, every year. But the actual tillers of the land, who are the tenant farmers, none of this money is going to them, sir. The reason being, they're not being recognized, sir. Taking this into the consideration, our Honorable Chief Minister, Mr. N. Chandrababu Naidu Garu, is enacting a forward-thinking legislation to empower the tenant farmers, sir. I am also moving a private numbers bills. So I request our Honorable Prime Minister Modi ji to take this issue at the union level and come up with a legislation so that
tenant farmers are given their rights, sir? मैं शिक्षा मंत्री से भी कहना चाहती हूँ कि हमारे गुजरात के साबरकांठा लोकसभा क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले साबरकांठा और अलवार के जिलों में शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इन जिलों में बड़ी जनजातीय आबादी निवास करती है, जिससे अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या अधिक है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अरवली जिले के मोड़ासा में मंजूर किए हुए केंद्रीय विद्यालय जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ है, आदरणीय मंत्री जी से आग्रह है कि मंजूर किए केंद्रीय विद्यालय का जल्द से जल्द शुरू करने की कृपा करें। In legislative business, the Lok Sabha on Tuesday considered and passed the Banking Laws Amendment Bill 2024. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the bill in the lower house. The bill further amends the Reserve Bank of India Act 1934, the Banking Regulation Act 1949, the State Bank of India Act 1955, the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970, and the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1980. Let us listen in to the arguments presented during the discussion on the bill. The proposed bill, sir, seeks to improve on governance standards, provide consistency in reporting by banks to the Reserve Bank of India, ensure better protection for depositors and also for investors, improve audit quality in public sector banks, and also to increase the tenure of directors other than the chairperson and whole-time directors in cooperative banks. So in specific, if I have to highlight the 7 of the 19 amendments that are being brought in now, I will, in a sequence, talk about amendments to the Banking Regulation Act, sir. The first one in the Banking Regulation Act is to allow up to 4 nominees. Sir, this includes provisions for simultaneous and successive nominations, offering of greater flexibility and convenience for depositors and their legal heirs, especially concerning deposits, articles in safe custody, and also of safety lockers. The Speaker informed the members regarding the sitting of the House on Saturday, December 14th. The measure has been adopted to recover time due to the lack of proceedings during the first week of the session owing to disruptions by the opposition. मैं सभा को सूचित करता हूं कि सभी दलों के माननीय नेताओं के साथ 2 दिसंबर 2024 की इस बैठक में ये निर्णय लिया था कि भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष चर्चा शुक्रवार 13 और 13 को शनिवार 14 दिसंबर 2024 को की जाएगी। तदनुसार सभा शनिवार को 14 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे भी बैठेगी और अगर आप सदन लगातार स्थगित करते रहोगे तो जो सदन जितने दिन स्थगित किया है उसके शनिवार रविवार को भी आपको बैठक में बैठना पड़ेगा। Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar on Tuesday called for upholding ethical standards in the House. He mentioned about receiving 42 notices related to Rule 267, the highest so far in the last quarter of the century. Let us listen into what the chairman said on the matter. Honorable members, what a paradox. We were talking about dignity of this House. I have received 42 notices, the highest so far in the last quarter of the century of adoption of Indian Constitution. And the notices are under Rule 267. One of the notices, remarkably, is in public domain, whereas by bulletin and otherwise we have mandated there can be no advance publicity. But much worse, that I had to seek counsel from Jairam Ramesh. I called him to my chamber. He is not the one who sent it. Raghav said I sent it.
It is in public domain and in 100% disregard of the provisions. It seems the gentleman has not read Rule 267 in once. One second. And putting it in public domain is too serious a matter. I would want this House to maintain highest ethical standards and protect our privileges. It is under my contemplation. I discuss with leaders what steps to be taken, because this is getting beyond control at the moment. Honorable members, since the number is 42, with your leave, I will not making reference to the names, because the number can grow to any level, at the level we have here. But one thing please take into consideration. Under Rule 267, I stand corrected, a member wants that the House normal functioning be suspended to discuss a matter. And the same member has given more than one notice under 267. That will be humanly impossible for anyone to accommodate the request of the member. I would therefore urge the honorable members to deeply reflect and allow me to proceed with the business of the House. I find some merit in what is coming from the members. My problem is, and the members would kindly appreciate, I have 8 matters that have been raised. And let me tell you the matters that have been raised. To discuss the recent controversy regarding Ajmer Sharif Dargah in Rajasthan, concern over law and order situation in Sambal, Uttar Pradesh, concern over law and order situation in the state of Manipur, demand for special category status for Odisha, concern over situation arising out of the recent cyclone Fengal in Tamil Nadu. Sir, can you bear with me? You are an experienced person. I am soliciting cooperation of the House to get feel of the House, how I should proceed. Please take your seat. Then, to discuss the allegation of corruption against Adani Group, concern over deterioration of law and order situation and rise in crimes in Delhi, to discuss need for special assistance to address the plight of people of Wayanad, concern over atrocities on Hindus in Bangladesh, attacks on their temples and arrest of ISKCON priests. Now, honorable members, one second. Honorable member, listen to me. Now, honorable members, some of these issues are already listed in 0 hour. During the question hour in the Rajya Sabha on Tuesday, a question related to PM Pranam scheme was raised by Madan Rathore. The member inquired if PM Pranam scheme promotes the sustainable and balanced use of fertilizers by adopting alternative fertilizers and promoting natural and organic farming. Minister of Chemicals and Fertilizers JP Nadda answered the query. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि पीएम प्रणाम योजना के तहत पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी आदि की खपत में कमी के माध्यम से उर्वरक सब्सिडी की कितनी राशि की बचत हुई और इसमें से राजस्थान को कितनी राशि दी गई। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पीएम प्रणाम योजना के तहत कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। योजना की धनराशि के उपयोग तथा उपलब्धियों के बारे में सदन को अवगत कराएं। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो योजना है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्रणाम योजना, ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है और देश के किसानों को एक नई दृष्टि और दिशा के साथ किसान की यील्ड भी बढ़े और धरती माँ की, सॉइल की यानी मिट्टी की क्वालिटी भी बनी रहे,
इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को लिया गया है। केमिकल्स और हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, विशेष करके यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, इसको कम करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। और इसमें जो उन्होंने कहा कि राजस्थान को या देश को कितना फ़ायदा हुआ है, तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इसका प्रोसेस इस प्रकार से है कि पिछले 3 वर्षों में जो फॉर्मूला है वो कंजम्पशन एवरेज निकाल कर, और इस वर्ष का जो क्या कंजम्पशन हुआ है यूरिया का, उसको निकाल कर जो कमी हुई है, जितना यूरिया कम उपयोग हुआ है, उसकी सब्सिडी को 50% स्टेट को जाएगा और 50% सेंटर को जाएगा। और दोनों ही जो पैसा है वो सारे का सारा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड द प्रमोशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए, आईईसी के लिए और उसके R&D के लिए, इन सब चीज़ों में वो पैसा खर्च होने वाला है, फ्रॉम द स्टेट ऑल्सो एंड फ्रॉम द सेंटर ऑल्सो। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे चलाया जा रहा है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो ICAR है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वह महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को एवेलुएट करती है, और एवेलुएट करने के बाद उस सॉइल की जो अलग अलग एवेलुएशंस आएंगे, उसके अनुसार कंजंक्शन में कितना ऑर्गेनिक और कितना इनऑर्गेनिक उपयोग करना है, इसके बारे में वो यानी इसके बारे में वो हमको प्रकाशित करेंगे, बताएंगे, और उसके अनुसार हम कोशिश करते हैं कि हम प्रमोट भी करें, और वो प्रोसेस को भी और प्रोडक्ट्स को भी, दोनों को वो बायो फर्टिलाइज़र और बायो एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, इन दोनों के उपयोग के बारे में बताते हैं। अभी इसमें मैं इतना कहूँगा कि क्योंकि ये पिछले 3 साल का एवरेज निकालना है, यह कार्यक्रम जो है वो पिछले खारिफ सीज़न से शुरू हुआ है, और पिछले खारिफ सीज़न, रवि सीज़न, फिर खारिफ सीज़न, और अब ये रवि सीज़न चल रहा है। तो इसका जो कंजम्पशन है उसके एवरेज के अनुसार इस साल का एवरेज निकाला जाएगा। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर के पास है, बहुत एडवांस स्टेज ऑफ कंसिडरेशन है, लेकिन हाँ, मैं सदन को ये ज़रूर सूचित करना चाहता हूँ कि PM प्रणाम योजना के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, और लोगों ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को भी उपयोग में लाना शुरू किया है, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कमी आई है, लेकिन वो एडवांस स्टेज ऑफ कंसिडरेशन है। वंस दैट कैलकुलेशन इज डन, तो वो भी पैसा सारे देश को मिलेगा और राजस्थान को भी मिलेगा। The Rajya Sabha on Tuesday discussed and passed the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024. Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri introduced the bill. Members from different political parties participated in the discussion. The bill was later passed by voice vote. I want to assure everyone, sir, this legislation changes the terminology, it brings in predictability, stability, and there is no attempt to reward any big person or like. This is a national asset, and I think if we don't exploit the national asset now, because our energy needs are such, there may come a time after 10-15 years when there will be a lid put on all fossil fuel utilization, when they say only green energy can be used. I am confident, sir, that in India we will need fossil fuels at least for another 20 years. My senior colleague can correct me, but we need to bring this legislation here in order to provide a win-win confidence not only to our own operators but also to the foreign investors, so that they can come and do business here with a view to benefiting everyone. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu on Tuesday moved the Bharatiya Vayuyan Vidhayak 2024 in the Rajya Sabha. The bill provides for regulation and control of design, manufacture, maintenance, possession, use, operation, sale, export and import of aircrafts. In fact, this bill has been passed by the Lok Sabha in the last session with a lot of good faith and a positive energy.
and I bring it with the same kind of energy to the Rajya Sabha, and I expect the same kind of support and cooperation from all the members here. Whenever an amendment came in, everything was put in bits and pieces into the act. Now, what did it lead to? There are a lot of redundancies, a lot of inconsistency, and a lot of disorganization happened within the original act itself. And now the International Civil Aviation Organization, which keeps auditing all the requirements, all the rules, regulations, the acts that any country has, it has recommended to India that why don't you look at your principal legislation once, because there are a lot of activities and a lot of inconsistencies happening. So why don't you come up again so that there is no redundancy happening in the principal act itself? And that becomes the base for us on bringing us this new amendment on new act, which is the Bharatiya Vayuyan Vidheyak. That is all we have in this episode of House Highlights. We will keep you abreast with further developments during the winter session of Parliament. Keep watching Sansad TV. Good night.